साथ आज स्टूडियोज के अंदर साइंस सिल्क के वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि उनका आईपीओ आ रहा है। भारद्वाज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। हाय। बहुत ही यूनिक कंपनी है आपकी भारत में। एक तो कोई साड़ी कंपनी अभी तक आईपीओ में नहीं आई थी मार्केट में, 35 सालों के बाजार को। तो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है कि भारत की जो वेशभूषा है, जो ओरिजिनल वेशभूषा तो साड़ी ही है वुमेन की, राइट। हालांकि समय बढ़ गया है, मॉडर्न हो गए हैं सब लोग, लेकिन वो उसका भी रिप्रेजेंटेशन मार्केट में हो रहा है। ये एक बड़ी खुशी है मुझे देख के। मैं इससे पहले कि आप ही कंपनी के बारे में बात करूं, साड़ी का जो सेक्टर है, साड़ी बिजनेस, चाहे वो डेली वेयर वाली साड़ी हो या महंगी साड़ी हो, 20-20 हज़ार की साड़ियाँ आती हैं, लाखों में भी आती है शायद। कितना बड़ा कारोबार है ये, ज़रा कुछ हमारे लिए बेसिक्स बताएं। ठीक है सर। Can I speak in English if you don't mind? हाँ हाँ बिल्कुल, मिक्स एंड मैच। ठीक है सर। So when we try to enter into this IPO process, we worked with Technopack Associates to understand how big the market is. So they came up with a number of, it's a 46,500 crore market size. 50% is coming from South India and 50% is coming from North, East and West put together. Okay. So now our presence is just in the South Indian states, and last year I think we've closed around 1,352 crores of revenue. Out of that we closed close to around 950 crores coming from saris, and last year we sold 38 lakh saris across the entire company. 38 lakh saris. Sir, that tells that, you know, our market share currently in this industry is around less than 2.5% of the total market size in the country. This was the vision why when we started the company in 2005. Okay. The addressable market was much higher because we wanted to launch this category for Kala Mandir for middle income class segment. Soon we understood that there are other categories as well, which is target niche audience, which is wedding and celebration audience. To target that's when we started other brands, Brand Mandir, Kanchipuram, Varamahalakshmi Silks and KLM. Now it's safe to say that, you know, our company offers products for all segments of the society. Excellent. All occasions, all niche audience, everybody else as well. Okay, so ये बताइए कि आपका मार्केट शेयर 2.8% है, आपने बताया। साड़ी का ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कितना है? मैं जानना चाहता हूं बेसिकली अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे कि आपके लिए रनवे ऑफ ग्रोथ कितना है। सर, अभी आप देख लिया तो 2020 में unorganized to organized, unorganized players were 30%, I mean organized players were 30%, unorganized players are 70%, okay. Which is growing towards 40 and 60 by 2025, 40 being organized and 60 being unorganized. Okay, so organized. Yeah. So market share बढ़ रहा है organized का. Yes, ma'am. So in all facts and necessaries, like, you know, thanks to GST or every other factor, like, you know, people are now forced themselves to, like, you know, being organized. And we being a industry veteran player in this industry, backed by strong technology backbone, it is fairly easy for us to, like, you know, capture a good size of this shift that's happening from the unorganized to organized. So भारद्वाज, क्योंकि हमने देखा कि आपकी ज़्यादा प्रेजेंस साउथ साइड पर है, लेकिन आपने आईपीओ के प्रोसीड से स्टोर्स ज़्यादा खोलने हैं, लगभग 30 नए स्टोर्स आप खोलने वाले हैं, तो क्या नई ज्योग्राफीज को भी टारगेट करने वाले हैं? क्या ये पैन इंडिया स्टोर्स खुलने वाले हैं? एक्सपोजर कहाँ ज़्यादा होगा? Ma'am, the current presence we have 54 stores in 12 cities only. हमारा जो मॉडल है वो क्लस्टर बेस्ड मॉडल, cluster meaning we try and identify target markets and penetrate deep with multiple stores and formats. Okay. So with the same model, we've understood that, you know, Tamil Nadu gives a strategic vantage point for us to, like, you know, operate. With that same vision, we opened 2 stores back in 2011-12, one in Kanchipuram and one in Chennai, where that's where the heart of the silk sari market consumption is. Sure. And we have been doing phenomenally well. And we have opened 2 new stores, one in Q3 and Q4 in Chennai again. Okay. Those stores are also doing phenomenally well. So we are now targeting to go into Tamil Nadu market with 25 stores of Varamahalakshmi and 5 stores of Kala Mandir. And if you take this market, the Tamil Nadu market has a combined potential of Andhra and Telangana. Today our current store presence in 54 stores, 80% of the revenue is coming from these 2 states. Okay. And Tamil Nadu, one state, has that much equivalent potential. And that's the reason why we are trying to go into the Tamil Nadu market with these 30 stores. Okay. And post this also, there's a lot of unexplored market just in South for us to explore. And probably soon we'll start entering into newer geographies
geographies as well as we speak. श्योर तो यानी आप इन कैचमेंट एरिया अपना साउथ को ही मेजर फोकस रखना चाहते हैं। हमने एक और चीज़ देखी भारद्वाज, क्योंकि आपके जो EBITDA मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं FY21 से लगभग 9% के आसपास EBITDA मार्जिन थे, जो बढ़कर अब लगभग 16% के पास आए हैं। यहाँ पर आप हमें हाईलाइट कर सकते हैं क्या फर्दर अपसाइड भी है? ऑफकोर्स न्यू स्टोर्स के साथ इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज भी आएंगे, तो EBITDA मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? There are 2-3 reasons why we think that EBITDA margins will definitely increase. The first most strategy is all of the stores are coming in a cluster model, so the revenue increase will never be pro rata basis in terms of our expenditures, because this is going to be a common corporate expenditure heads that we will have. Okay. And the cluster model will enable us to ensure that there is not the significant costs associated with it. That's number one. The second thing is the core product profile that we are trying to expand is Varamahalakshmi Silks in silk saree segment, because all these 25 stores are coming in one single state. The economies of scale will kick in, and coming down to your advertisement and other expenditures as well, when you look at Varamahalakshmi Silks as a format, it is much lesser. Like if you take about our company level advertisement, A&B spend is less than 3%, and Varamahalakshmi Silks format, to be precise, in the history we have never run end of season sale, no discount, no bargaining. It's all full price sale. With all of these strategies in place, we definitely would see a much bigger improvement in terms of your EBITDAs and gross margins. Okay, so आप फ्यूचर के ग्रॉस मार्जिन्स और EBITDA के बारे में तो बात नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पास्ट के लास्ट 3-4 साल के एवरेज ग्रॉस मार्जिन्स और EBITDA क्या रहे हैं, और इसके बारे में अगर बताएं. Sir, 37% is what we've done last before year, and we've done 39.1% in the last year as well. The ideology for the company has always been to sharply price our products, because customers should see the value for money. It is just not a highly priced product and once in a year we do a clearance sale trying to clear it off. That is the strategy. We only price our products very sharply, because our competition, as you see, it's not just organized players, there's also unorganized players in the market, and we need to price our products very sharply to ensure that our market share is standing solid for us. And that's the reason why our gross margins are 39.1, and though we have a visibility to increase our gross margins in the near future, we have a set game plan in the next couple of years where we can see a good margin improvement as well. Okay. और इंडस्ट्री ग्रोथ वर्सेस योर ग्रोथ, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी कर रही है? Sir, industry growth per se is doing about 8% of industry is growing year on year cumulative annual growth rate. But for us, our growth rate is coming from 2-3 aspects. One is we are adding incremental stores. I think last year we did a revenue of 20% of increment in terms of revenue. But this organized to unorganized shift, as ma'am mentioned, that is also paying a great way for us to capture these markets, because that actually is also turning towards our SSGs being fairly decent here. ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी आज हमसे बात करने के लिए. एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल, पहली सारी कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है, हाई मार्जिन, गुड ग्रोथ, बट बेस बहुत बड़ा है, कुछ 48,000-50,000 करोड़ रुपए का तो पूरा इसका इंडस्ट्री है, और ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज शिफ्ट का भी फायदा होगा. देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होता है इस IPO में पैसा लगाने का, और उनका क्या वर्डिक्ट आता है. हमने कुछ ब्रोकरेज नोट्स अभी आप सबने चलाए थे. चलते हैं वापस, हमारे साथ संतोष तो बने हुए हैं. संतोष, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपनी घर में फैमिली के लिए साड़ीज वगैरह खरीदते हैं या नहीं? संतोष, ये IPO खरीदेंगे आप? सॉरी अजीत जी, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया. मैं कह रहा हूँ एक IPO आ रहा है सारी कंपनी का, आपने तमाम IPOs देखे हैं रिसेंट में, साड़ी तो आप खरीदते ही होंगे अपने फैमिली के लिए, इस IPO में डालेंगे पैसे? जी अजीत जी, वैसे मैंने इस IPO का एनालिसिस भी किया था. कंपनी वैसे फंडामेंटली भी अच्छी, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, एंड वैल्यूएशन वगैरह भी कंफर्ट है. तो जिसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई अप्लाई करना चाहता है तो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, और आई थिंक पहली ही होगी इस टाइप की कंपनी, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा लग रहा है. बट अभी मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन इतना ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है. चलिए इसके बारे में बात कर ले. एक स्टॉक है PNB गिल्ड्स, हालांकि वो बॉन्ड मार्केट में काम करते हैं, और ये जो बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन हो रहा है इंडिया का, इसमें डेट FIs के डेट पे काफ़ी पैसा आना शुरू हो जाएगा. इसके चलते ये स्टॉक बड़ा एक्टिव हो गया. जरा केवल चार्ट्स देख के बताए PNB गिल्ड्स के 18%. ये साल में 2-4 बार चलता है, लेकिन बहुत जोर से चलता है. कई बार शायद ट्रेडर्स फंस भी जाते हैं, तो केयरफुली ट्रेड करने वाला स्टॉक है. बट चार्ट्स क्या लगते हैं? जी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है. इसमें एक डाउन स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है,
ये आपकी बात सही है कि हमेशा चलता है और फिर ट्रैप हो जाते हैं इसमें इन्वेस्टर्स, बट अभी लग रहा है कि शायद स्टॉक में और पोटेंशियल है। जो प्रीवियस इसके हाई थे जून 2021 के, वो करीबन 92 93 रुपीस के आसपास के थे, तो मुझे लगता है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, पोटेंशियल रखता है, तो बने रहिए। आज का जो लो है 75 का, वो स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलिए, स्टॉक को 92 93 के टारगेट के लिए होल्ड रख सकते हैं।